Yes, friends. Today we are going to discuss the topic causes of the French Revolution. In last class we have discussed about the political cause of the French Revolution, and now today we are going to discuss about the social cause of the French Revolution. In social cause of the French Revolution, we have to look into the composition of society, how society was composed during the revolution. Over here you have to remember one more word, that is old regime. Old regime refers to the institutions and society during the 18th century France. मीन्स फ्रांस में 18वीं शताब्दी में जो व्यवस्थाएं थी और जो सोसाइटी थी उसके लिए वर्ड यूज होता है ओल्ड रिजीम। यहाँ पे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ओल्ड रिजीम। तो ओल्ड रिजीम का आशय है कि वो व्यवस्थाएं, वो संस्थाएं और समाज का वो ढांचा जो रेवोल्यूशन से पहले अर्थात 18वीं शताब्दी में फ्रांस में मौजूद था। तो हम बात करते हैं रिगार्डिंग दी कंपोजिशन ऑफ सोसाइटी। तो इन फ्रेंच सोसाइटी देयर वाज ए स्टेट सिस्टम। स्टेट मींस देयर इज अ ग्रुप, मींस डिफरेंट पीपल हैव बीन ग्रुप्ड टुगेदर, दैट वाज कॉल्ड स्टेट सिस्टम। और वहां पे 3 स्टेट में समाज बटा हुआ था, 3 स्टेट्स में। वन इज फर्स्ट स्टेट जिसमें आते थे क्लर्जी। क्लर्जी मतलब the religious gurus, और उस समय चर्च की डोमिनेशन थी। The Orthodox Church was dominating in France. So actually church was very powerful. Scholars used to say that church was a state within the state. It was true for the European society. क्या कहने का मतलब है स्टेट विदिन द स्टेट। अब देखिए एक्चुअली चर्च, नॉर्मली चर्च इज सीन एज अ रिलीजियस प्लेस, बट एक्चुअली ऑन दैट टाइम चर्च वाज द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड सोशल एक्टिविटीज। यानी आप कह सकते हैं कि पूरी की पूरी फ्रेंच सोसाइटी की सेंटर थी, या उसी के चारों ओर पूरी फ्रेंच सोसाइटी रिवॉल्व करती थी। ये बहुत पावरफुल डोमिनेटिंग privileges. What were the privileges? Actually they were exempted to pay any kind of taxes. ये टैक्स नहीं पे करते थे, रादर ये टैक्स को कलेक्ट करते थे। तो किससे कलेक्ट करते थे? तो ये टैक्स, जैसे एक एग्जांपल मैंने लिखा है ताइथ। ये टैक्स लेते थे वो पीजेंट्स, वो पीजेंट्स से टैक्स लिया करते थे। या यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेम द टैक्स collected by clergy from the peasant, or name the taxes paid by peasants to clergy or to the church. It was done. तो मैंने क्या कहा कि they were dominating, they were privileged class, they were exempted to pay any kind of taxes, but they were having a right or privilege to collect taxes from peasant. What was the name of the tax? That was tithe. One more thing, church was occupying vast piece of land. And that piece of land was used for the purpose of cultivation. Church was acting as a landlord, and church was hiring peasants for the cultivations, and church was also collecting taxes from them. That I have already explained. So church having great production from those land was used to sell to the market and earn money. Church was lending money to noble also, to king also, whenever a state was in crisis. Means जब राजा को पैसे की तंगी होती थी तो राजा चर्च से कर्ज लेता था। राजा चर्च व्यापारियों को भी कर्ज देता था, मनी लेंड करते थे और उनसे ब्याज की वसूली करते थे। तो चर्च इज हैविंग ग्रेट powers in every sphere of life. Church was regulating the French society. So that was the domination.
Actually, a number of occasions, church was directing king. Even king was not able to go beyond the rulings, proceedings, suggestions, orders given by the church. This was the scenario. So you can understand, church was the center of the society. Next state was the second state, that was called nobility. Who were called nobles? Nobles were the royal family members and their associates, jamindars, landlords. They all belongs to that nobility. This nobility was also enjoying a number of privileges based on birth. जन्म के आधार पे ही इनको विशेषाधिकार की प्राप्ति होती थी। क्या मतलब है? मतलब ये है कि यदि जमींदार का बेटा गद्दी पे आएगा तो उसके पास भी उसी जमींदार के सारे अधिकार होंगे। वो क्या क्या अधिकार होंगे? तो जैसा कि हमने यहाँ देखा कि ये टैक्स पे नहीं करती थी, ये भी टैक्स पे नहीं करेंगे। यानी देखिए, राज्य की ताकत का ये प्रमाण होता है कि राज्य यानी सरकार टैक्स को कलेक्ट करती है अपने नागरिकों से। परंतु आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि क्लर्जी और सेकेंड स्टेट नोबिलिटी, they were exempted to pay any kind of taxes to the state. यानी राज्य को ये टैक्स नहीं देंगे, but they were collecting tax. अब यहाँ पे टाइप देखा, तो ये नोबिलिटी यानी कि राजा की बात या रॉयल फैमिली की बात करें या हम जमींदारों की बात करें, they were collecting taxes from the peasants, those who were working on their land. और इसके अलावा peasants had to provide their services to nobility. peasants को उनके खेतों में काम करना है, उनके घरों में काम करना है, सड़कों को बनाने के लिए काम करना है, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उनके आदेशों पे इनके लिए निजी रूप से काम करना है। तो ये परिस्थितियां थी। तो अल्टीमेटली who were the sufferer? Actually, the sufferers were the people belongs to the third estate. And who were the people of third estate? The peasants. Actually, they are also called commons. Actually, 90% of the French population belongs to this particular group. Means peasantry was the largest group of society. Nearly 90% of population belongs to the peasant class. Unfortunately, these peasants were having very small piece of land. A number of peasants, mostly peasants do not have their own land. Some peasants are having a small piece of land that was not enough to earn their means of living. In that context, what they have to do to survive? They have to work for church also, they have to work for the nobility also. These peasants were overburdened upon the taxes. They had to pay a number of taxes. They had to pay some direct taxes, some indirect taxes. For example, tithe was a tax, direct tax paid by the peasants to the estate. हमने ये भी देखा कि यहाँ वो टाइट्स को देते हैं किसको, तो वो दे रहे हैं यहाँ पे चर्च को। तो यहाँ देखिए, ये दोनों को टैक्स दे रहे हैं। इसके अलावा कई सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे, जनरल कंजम्पशन के गुड्स के ऊपर से सॉल्ट के ऊपर टैक्स था वहाँ पे। आश्चर्य लगता है कि केवल सॉल्ट टैक्स हमारे हिंदुस्तान में लगी? नहीं, वहाँ भी सॉल्ट के ऊपर टैक्स था उस समय की परिस्थिति में। तो ये सिनारियो थी। तो अल्टीमेटली आपको क्या लगता है? हम ये पाते हैं कि ये जो थर्ड स्टेट है, they were the sufferers, they were the taxpayer, they were the earners, but they were not getting any kind of privilege. Rather, they were treated inferiorly in the French society. Ultimately, this was the scenario. From this particular group of people, a new class that was called the middle class emerged. That middle class were the prosperous ones, the educated ones, thinkers, philosophers, professionals. They now started to think about their condition. They felt that even though they are paying everything, they are paying taxes, and on the basis of those taxes, on the basis of those money, church and nobility, means first and second estate, were enjoying a luxurious life. But what they were getting? They were getting ill treatment. So now that group of people were started shouting for their rights, and that is the key for the French Revolution, because the French Revolution is going to be led by that middle class. So we will discuss this particular topic regarding the middle class,
After that, so you have to remember that we are going to discuss about the middle class, higher middle class. They come from these commons. Remember, दुनिया में जितने भी मूवमेंट हुए हैं, जितने भी आंदोलन हुए हैं, उन सबको लीड करती है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास की चट्टान बड़ी ही गजब की होती है। मिडिल क्लास हमेशा ये भयभीत होता है कि वो डाउन टू द बॉटम चला जाएगा अगर वो आगे नहीं बढ़ेगा, और वो आगे बढ़ने में सबसे अधिक विरोध उसे अपर क्लास का करना पड़ता है। तो अपर क्लास के खिलाफ उसकी संघर्ष होगी ही होगी, क्योंकि वो बीच में है, वो बीच में दबेगा तो वो हमेशा ऊपर की ओर भागने की कोशिश करेगा। तो सबसे अधिक जो हलचल होती है समाज में वो मिडिल क्लास के ही बीच होती है। मिडिल क्लास सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, सबसे ज्यादा। और सच पूछिए तो सबसे अधिक छटपटाहट, महत्वाकांक्षी यही मिडिल क्लास होता है। और यही मिडिल क्लास अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ हमेशा आगे बढ़ करके विरोध करती है। दुनिया का इतिहास गवाह है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इस सोसाइटी के कंडीशंस के अनुरूप अब क्या होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, वो हम करेंगे इकोनॉमिक कॉज। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे राइज ऑफ द मिडिल क्लास। तो इकोनॉमिक कॉज में हम देखेंगे सर्वाइवल के लिए क्या चुनौतियां हैं इस सिनेरियो में। जब पीजेंट्री है यानी कि एग्रीकल्चर सोसाइटी है, आप अनुमान लगाइए अगर क्रॉप फेलियर की कंडीशन हो जाती है, अगर ड्राउट हो जाती है, व्हाट विल हैपन, हु वर द सफरर्स, दे। And during this kind of conditions, even though they were the sufferers, but these two group of people, means first state and second state, do not compromise while collecting the taxes. So ultimately there was a huge burden on the third state, which is the peasants. So that created a situation that is called a struggle for survival, that is called subsistence crisis. So next topic we will discuss about the economic cause of French Revolution, in which we will discuss about economic conditions of the French society, in which we will discuss about the how economic hardship created or paved the path for the French Revolution. Means survival, struggle for survival. Thank you. Una aula más. Muy bien,